Bismillahirrahmanirrahim. So we are going to start medical ethics from Tanveer notes. So as brother said that it is a smaller portion of your exam preparation, but from the single page for sure have questions in your exam. Each line is a key frequently tested fact. So this is a game changer. So we have to learn them first. So what is medical ethics? What is medical ethics? Okay. Here you can see medical ethics is a system of moral principles that apply values and judgments to the practice of medicine. It recognizes four basic moral principles. What are the four basic moral principles? ये हमारे एमसीक्यूज में आ सकता है और ये पिछले पास पेपर में कई दफ़ा आया है. Four values. Basic principle: autonomy, beneficence, non-maleficence and justice. ABMJ से याद कर लें. Autonomy क्या है? The patient has the right to refuse or choose their treatment. ठीक है. Beneficence क्या है? A practitioner should act in the best interest of the patient. Beneficence मतलब फ़ायदा हो जिससे ना पेशेंट को. तो जो डॉक्टर है उसको चाहिए कि वो जो पेशेंट है उसके फ़ायदे को देखे. थर्ड है नॉन मेलिफिसेंस, मतलब जो नुकसान ना दे. डोंट हार्म, फर्स्ट डू नो हार्म. और जस्टिस क्या है? कंसर्न्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ रिसोर्सेज एंड डिसीजन ऑफ हु गेट्स व्हाट ट्रीटमेंट. मतलब जिसको ज़रूरत है उस तक ट्रीटमेंट पहुँचे, हमने जस्टिस करनी है. ऑटोनॉमी क्या है? कि इन पेशेंट के पास अपना राइट है कि वो कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाह रहा है और कौन सा नहीं. हमने उसको ऑप्शन बताने हैं और उसने चूज़ करने का उसका राइट है. बेनिफिसेंस ये है कि जो डॉक्टर है वो पेशेंट के फ़ायदे को देखेगा. ठीक है. और थर्ड है डोंट हार्म, नॉन मेलिफिसेंस. और फोर्थ है जस्टिस. और जो हेल्थ रिसोर्सेज और डिसीजन है उसको हमने देखना है कि किसको ट्रीटमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है, किसको नहीं है, किधर ज़्यादा हेल्थ रिसोर्सेज कंज्यूम होने चाहिए, ये सब. ठीक है. ABNJ. Okay. So tips for exam is sometimes in exam they ask about the order of these pillars. Okay. So it's very easy. Just remember their alphabetical order. ABUDJ. ABUDJ. ठीक है. अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर. ए से ऑटोनॉमी, बी से बेनिफिशेंस, डी से डोंट हार्म, और जैसे मैंने ABNJ का है तो ABDJ आप कर लें, एंड जे से जस्टिस. ठीक है. सम इम्पॉर्टेंट सिनेरियो फॉर एग्जाम्स. पेशेंट ऑटोनॉमी grants every competent adult patient the absolute right to do what he wishes with his own health care. एथिक्स क्या है? द मॉरल एस्पेक्ट ऑफ डॉक्टर्स प्रोफेशनल लाइफ. ये एक स्टेटमेंट उठाई गई है जो कि एमसीक्यूज़ में आई होगी कि एथिक्स क्या है, तो उन्होंने डिफरेंट ऑप्शन दिए होंगे तो हमने पिक करना है. ठीक है. कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है? कॉन्फिडेंशियलिटी इज़ अ फॉरमोस्ट पार्ट ऑफ हिपोक्रेटिक ओथ एंड टू कीप सीक्रेट ऑफ पेशेंट ट्रीटमेंट इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी. अगला पॉइंट है डॉक्टर कैन वायलेट कॉन्फिडेंशियलिटी ओनली इफ़. कौन सी कंडीशन है जिधर कॉन्फिडेंशियलिटी पेशेंट की डॉक्टर ब्रेक कर सकता है? वो है इफ़ पेशेंट हैज़ HIV, TB और STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़. क्योंकि इन कंडीशन से जो दूसरे इनोसेंट लोग हैं, जो बाकी लोग हैं, उनको नुकसान हो सकता है क्योंकि ये इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं. और अगर ये ऑप्शन नहीं है एमसीक्यूज़ में तो फिर हमने क्या करना है? सेकंड ऑप्शन क्या होगा बेस्ट? इफ़ द पेशेंट अलाउस. जब पेशेंट ने कह दिया कि आप बता सकते हैं तो सो यू कैन. अगला पॉइंट है द डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़.
डॉक्टर पेशेंट रिलेशन के लिए सबसे पहले क्या चीज़ है कि म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए दोनों के दरमियान. In our society, female death apart from obstetrical death, क्या है रीज़न? obstetrical death के अलावा कौन सी रीज़न है? Domestic violence. Okay, so how can doctor provide better management to patient? By better communication. बातचीत करके. अच्छा, by definition, minor is under the age of 18. Generally, minors are not considered competent to make own decision. Only a parent or a legal guardian can give consent for a minor. Achha, fetus is not a person until birth. Hence, no matter what your personal feelings may be, the fetus doesn't have any intrinsic rights as a person, and all the healthcare decision making and ethics are based on the choices of the mother and her interests. जब तक बच्चा पैदा नहीं हुआ तो उसका कोई राइट नहीं है एज अ पर्सन, एंड ऑल द जो उसकी जो डिसीजन मेकिंग है वो सारी उसकी माँ या जो उसके जो वारिस वो करेंगे. टिप फॉर एग्जाम क्या है? इन ऑल सच सिनेरियोज, नो मैटर हाउ मच कॉम्प्लेक्स द क्वेश्चन इज, रिमेंबर द वन एंड ओनली रूल, सेव द मॉम. अच्छा, अगला है मेडिकल इंफॉर्मेशन सच एज द रिजल्ट ऑफ अ बायोप्सी मस्ट गो द पेशेंट फर्स्ट, नॉट द फैमिली. मेडिकल इंफॉर्मेशन जो भी है वो हमने सबसे पहले पेशेंट को बतानी है, उसकी फैमिली को नहीं बतानी. ठीक है, सबसे पहले पेशेंट को बतानी है. कॉन्सेंट इज इम्प्लाइड इन इमरजेंसी, नीदर अ कोर्ट ऑर्डर नॉर इज द एथिक्स committee required to give permission before the doctor can administer therapy in an emergency. ठीक है, इस कंडीशन में हम कॉन्सेंट की ज़रूरत नहीं होती. जब इमरजेंसी होती है, कोर्ट ऑर्डर होता है या एथिक कम्युनिटी रिक्वायर्ड टू गिव परमिशन बिफोर द डॉक्टर कैन एडमिनिस्टर थेरेपी. ठीक है, उनकी परमिशन की भी ज़रूरत नहीं होती इन कंडीशन में. इनका कहने का मतलब ये है कि इमरजेंसी में आपको ना तो कोर्ट ऑर्डर की ज़रूरत होती है, ना एथिक कम्युनिटी की परमिशन की ज़रूरत होती है बिफोर द डॉक्टर कैन एडमिनिस्टर इन इमरजेंसी. क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन है, उस टाइम हमने देखने के बेस्ट क्या है पेशेंट के लिए. अच्छा, फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड इज़ ऑलवेज कंसिडर्ड इनकरेक्ट and ethically unacceptable, though in some states it is legalized. But what is legal doesn't automatically equal what is ethical. The information care session is for clear the myths and misconceptions of the patient and relatives about the disease. इंफॉर्मेशन के सेशन किसके लिए होते हैं कि मिथ्स और मिसकंसेप्शन पेशेंट और रिलेटिव है उनको दूर किया जाए. जस्टिस इन मेडिकल एथिक्स इज़ बेस्ड ऑन इक्विटी. ठीक है, जहाँ ज़रूरत है उधर देना, ये नहीं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी, बल्कि इक्विटी को हमने दिमाग में रखना है कि जिधर जिधर ज़्यादा ज़रूरत है उधर ज़्यादा देंगे, जिधर कम है उधर कम. ठीक है, द अर्जेंट कंसर्न ऑफ द पेशेंट व्हेन ही मीट्स अ डॉक्टर इज़ व्हाट्स रॉन्ग विद हिम. मतलब उससे मसला क्या है, वो सबसे पहला कंसर्न होता है पेशेंट का. A patient on ventilator and attendant asking you, why are you using it? Tell him about the benefit of ventilation. अगला पॉइंट है ब्रेन डेथ इज लीगल डेफिनेशन ऑफ डेथ विच इज़ द लॉस ऑफ ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस. अ पर्सन इज डेड व्हेन ब्रेन इज डेड इवन इफ द हार्ट इज बीटिंग. Any assault leading to brain death is murder. Seductive female come to your office. What should you do? Call the nurse. अच्छा, ये frequently asked question है, tested है. Type A personality is at risk of increased heart diseases. Psychosocial stress is economic viability. Pharmaceutical and doctor relation क्या है? Welfare for institute. किस लिए रिलेशन है? वेलफेयर फॉर इंस्टीट्यूट.
pharmaceutical representative has come to you and is offering you a free 3-day trip Thailand. He tells you that there will be an academic panel discussion in your hospital about a newly launched drug and wants you to take part in it. तो आपने क्या करना है? Refuse politely. If this is not an option, then prefer ask your hospital administration what to do. अगला है counseling in patient is to help themselves. अच्छा अगला पॉइंट है, अ यंग गर्ल हु इज़ गोइंग टू डाई एंड आस्क यू एम आई गोइंग टू डाई, डॉक्टर रिस्पॉन्स शुड बी what your parents have told you. Okay, the next point is patient support in our culture is through family. What prevent complications regarding the intervention procedure, our procedure? What prevents complication within limitation of professional competence? Parents are informed about the disability of their child due to debilitating disease. The first reaction of the parent is denial. वो मानेंगे नहीं कि ये हो गया. A 30-year-old woman in Azad Kashmir was injured mildly in an earthquake that killed many people apart from her distant uncle. She would most probably in situational crisis. अच्छा, referral system means sending patient to a better, higher facility. Sickness क्या है? Patient self perception of disease. Sick role मतलब exemption from normal duties and obligations. A diabetic man comes to your office saying that he is having problem in bed with his wife. Next step taken by physician is counsel the patient that it's common in diabetes. Tip for exam क्या है? This question is actually taken from BRS book on behavioral sciences, and the true answer is what do you mean the problem in bed. So if in option is if the option is there, then you have to prefer this one, like what do you mean by the problem in bed, otherwise click the other option. Okay, so our next point is doctor is recognized by politeness and good bedside manners. Okay, so an old patient comes to OPD and complains about the behavior of people around her, and also complains about receptionist who was famous in community for his nice behavior. What would you do? Apologize her and ask her to talk to receptionist. Next point is small gifts from the patient of nominal or modest value are acceptable, but not if the patient expect an extra or different prescription for something in exchange for gifts. Next is to prevent the complication of a procedure intervention. Doctor should not cross his competency level. Okay, so next point is when there are two options of treatment, go with one the patient wants. For example, if a pregnant lady wants spontaneous vaginal delivery and not giving consent of C-section, in spite of knowing that spontaneous vaginal delivery may be harmful to baby, go with spontaneous vaginal delivery. So we have to follow what the patient says. Breaking bad news should be told to patient in a formal session exclusively. Sometimes another option is given, that is present information in a crispy and acceptable way. Click it if formal session not given. Next point is for efficient patient-doctor relationship, best way to start conversation by asking about his name, age and address. Okay, so medical ethics is done. The next chapter is virology, summary to virology. We are going to talk in the next video. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.